Um, I guess we're live. Let's just see. Let's just see. Present क्यों नहीं आ रहा है? Okay, no. Let's just check if you're live. We already have, I think, one comment, so let's address that. But sharing the screen, I think my screen में कुछ और ही tabs में कुछ और ही है. But yeah, let's present. Let me clean some. Think 8 minute, 10 minute. Okay, here we are. Hello guys. Oh, hello. Wait a minute. I'm not able to hear my stream. I'm just checking if it is audible. Just a second. Yeah, I think I'm audible. So, am I audible? I'm audible. So we have like sell Pedro to Jesus and have zero in the bank, or start Sar or Pedro and roll. I don't think João Pedro is a burden, should not be a burden for this fixture. Although I see why you want to move towards Jesus because of the form he is in right now, but I don't think there's some necessity to move from João Pedro to Jesus. But um, if you think that Jesus is much more likely to haul, then that you can consider that option. But if you feel that you have transfers, I think you have limited transfers, limited budget. So I think you can roll for this game week because, anyways, yeah, the possibility of Jesus hauling is much more higher, but he's also playing around players who can haul as well. So it's not just that only one player is going to haul in that team or is most likely to haul. I think you can roll for this game week. So let's just go through news. If we have any press conferences, Salah said that it's his last season because obviously usko kuch, he hasn't been given any proposal. Uh, let's just see if we have any news. Morgan Rogers suspended. A lot of people out. Pau Torres is out. Is Mings back? I didn't see Aston Villa's last match, but yeah. Just a second. Just a second. Uh, let's see if there are any suspensions or injuries. Start Sar or Pedro. Oh, this is a tough one. What's a full team? If you can tell me, if I feel that maybe an extra defender can be benched or a midfielder can be benched. I don't know. I think both of them you can start. I don't know what constraints do you have right now. I think the biggest problem in my team right now is is not having Trent. I think Trent will be one of the most high potential, high ceiling or transfer this of this game week. Uh, just a second. Okay. So going through your 8 minute, going through Nottingham Forest, Nuno revealed that Murillo and Callum Hudson-Odoi should be okay. Nottingham Forest being second is like pretty funny, I think. And clearly, right now, since half of the league, half of the you know has completed, half of the league is completed, they will be pretty happy to be where they are right now. That is at second right now.
which clearly shows what is a level of competition in the league right now. It can be both positive and negative. The year at Fulham, we have okay, nothing much. Wolves, we have Cunha suspended for 1 game week, and okay, Baki sab it's normal. Lamina is out. Rashford will miss again. Rashford missing for consecutive 4 5 game weeks. Raya, Trent, Gabriel, Hall. Okay, Trent, Gabriel, Hall. Okay, and then Semenyo, Palmer, Diaz, Salah, Sar, Pedro, Isaac Wood. Why are you starting Semenyo? Let me see how Semenyo has performed in the last few game weeks. Even though, yes, I kind of agree the fact that Semenyo has been underperforming for sure because a lot of fixtures, Bournemouth is Bournemouth is kind of scoring a lot of goals, but Semenyo is not involved in all of them. And 5.383. Okay, understandable. Understandable why you want to start him home game as well. Uh, Let me just tell you about Sar. About Sar is that he's facing Chelsea at probably the worst time. I would be more optimistic if you had Eze. So, yeah, I mean, starting Semenyo, I think it should be your question be Semenyo or Sar or Pedro because three of them have potential to score. Uh, so let's come to Sar. Sar is 5.9 and is facing Chelsea at home. I think Crystal Palace at home. Yeah, Everton at home. Exactly. I saw that. I saw that. Uh, it'll be a tough one because Everton has been doing well in the last few game weeks because they have been holding well. Uh, yeah, it is actually a very tough call. It's not an easy call. So I think go with your instincts if you feel. Let me see, Pedro, João Pedro. João Pedro at home versus Arsenal. Okay, that's now understand why you wanna bench him. Yeah, I think based on fixtures, I would probably okay, Suez, this is a question for you, which I'm facing difficulty. Actually, I'm facing difficulty in answering this question. Start Sar or Pedro because I think he has Semenyo, who he wants to start because he's playing Everton at home. But Sar is facing a vulnerable Chelsea right now, and Pedro is facing Arsenal at home. It looks like you should bench Pedro, but I don't know. Versus it's João Pedro likes to do stuff versus big teams. Versus big teams and yeah I mean जाओ पेड्रो को ऐसे फिक्चर्स बहुत पसंद है या दैट्स आई थिंक लीस्ट विजिबिलिटी लास्ट मतलब सुबह सुबह तो कुछ नहीं बस सामने की बिल्डिंग नहीं दिख रही है बहुत कम विजिबिलिटी है एनी any other news that we know of so Rashford is a big news right nothing else मतलब big क्या it's the same news but compared to all the okay Reece James is back okay Reece James is back that is good maybe for Chelsea because they have not done well in the last game week. Injury situation for Pep is, I think, it remains the same. उसके बाद न्यूकासल में विल्सन पोपक्राफ्ट same thing. Sven Botman is back. Oh, that kind of that convinces more on तेज में फॉरवर्ड बताओ कुन्हा की जगह yes I think कुन्हा की जगह पता मैंने फॉरवर्ड्स का एक वीडियो बनाया था पर मैंने डाला ही नहीं okay so the first replacement and उसमें I think वुड नहीं था जितना मुझे याद है वुड नहीं था I think first one is going to be Jesus भाई because Brighton away, a lot of space for him, and I think आने वाले टाइम में इसको मिनट्स मिलने वाला है, and he's that type of player who जिसको हॉल करना पसंद है, who's like points attract करता है बंदे. I had 21 points between Pedro and Hall on bench last week and still managed to gain. Wow, wow, wow. Your team is like good because you had Trent, right? You had Trent. I think that's 15 points तो आपको वहां से ही मिल गए थे. Trent का situation काफी scary है because I still don't want to own him, but uh, he's causing a lot of issue in my rank, to be really honest. Gabriel Jesus, yeah, first one was Gabriel Jesus. Um Brighton Spurs after Brighton which is an open game for Jesus उसके बाद दो home game Spurs and Aston Villa that is why Gabriel Jesus becomes the first replacement of Cunha. If we go second I think I don't think I'm going for Wood. I don't think I'm going for Wood. उसके बाद I think who did I pick? I picked Nicholas Jackson again. I think Nicholas Jackson still after a Crystal Palace game where anything could happen.
Anything could happen. We really don't know how Chelsea is going to respond. After that, we have two home games for Nicholas Jackson as well. So I think मैं सफर कर रहा हूँ तो साथ में सफर करना चाहिए सबको. That is the main logic. Uh, उसके बाद I think the third option was Watkins. Watkins because of his home fixture at मतलब लेस्टर को खेल रही है. लेस्टर को खेल रही है at home. Thank you. हाँ. So Leicester को खेल दिया at home, Watkins and next two fixtures away. But I think Aston Villa likes to fight. Just we're just hoping that एक मिनट रुक जाओ. हाँ हाँ वॉटकिंस की बात कर रहे थे तो नेक्स्ट होम गेम वर्सेस लेस्टर बट इसके बाद एवर्टन अवे एंड आर्सेनल अवे आई थिंक फिक्चर का प्रॉब्लम नहीं है गोल स्कोर करना इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ एस्टन विला ओके so I think it's more about that. So I think Watkins can do well. I think Abe was not there, so we were talking about Cunha's replacements. So first one is going to be Gabriel Jesus, and second one was Watkins. I'm still not going for Wood. Wood is decent. मतलब he has 11 goals. Let me talk about Wood. Wood का मैं basically इस season का क्या है? He's second highest forwards. मतलब scorer in forwards. नहीं नॉट स्कोरर मतलब सबसे ज्यादा पॉइंट्स आए हैं सेकंड हाईएस्ट वुड के दिस सीजन ही हैज गॉट 11 गोल्स इन एंड दैट टू इन 20 शॉट्स ऑन टारगेट मतलब उसने अपना बहुत ही ओवर परफॉर्म किया है एक्सजी क्रिस वुड ने and because 11 goals in 20 shots on target and he was lucky with a bit of defensive errors as well and आई थिंक न्यूकासल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट ने उसमें से बहुत पॉइंट्स कमाए क्लिनिकल रहा है डेफिनेटली बट बहुत ओवर परफॉर्म किया बट आई थिंक इफ नॉटिंघम फॉरेस्ट हैज दैट थिंग इन देम टू स्टे एट द टॉप मतलब सेकंड पोजीशन में मतलब अभी आधा सीजन हो गया तो आई थिंक दे विल बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द चैंपियंस लीग chances because why not even though but I'm saying this because 20 game weeks have passed अगर कुछ 10 गेम वीक हो गए होते तो आई थिंक आई वुड नॉट हैव सेड कि मतलब दे कैन प्रॉब्ली बट या 20 गेम वीक्स के बाद यू हैव टू बी अ बिट optimistic about your team. So Wolves away, it's more of a Wood has always Wood का क्या है ना he also gets rotated. So you have to be kind of be really be careful. So forwards में I think I'll go with Gabriel Jesus के लिए जाऊंगा Watkins के लिए जाऊंगा and Mateta का है. Why is Mateta is not bought in? Mateta कहाँ है? Mateta है ही नहीं लिस्ट में ऐसा क्यों है आई थिंक Mateta will do well. Mateta at 7.2. Chelsea at home at probably their worst. Last week Chelsea's worst performance. उसके बाद Leicester away, West Ham away, Brentford at home. So Cunha replacements. Three options that I would give. Three options I would give. Watkins, Gabriel Jesus and Mateta. I'm not that optimistic about Wood. Even though वो जिस form या consistency maintain कर रहे हैं तो good for you. Let's just look at Abhay's. देखो पूरा रेड है पूरा रेड है पूरा रेड आई थिंक बहुत ही गंदा मेरा चल रहा है आई थिंक सीजन जिस हिसाब से आई डू एफपीएल उस हिसाब से तो बहुत ही गंदा चल रहा है भाई तो तेरे को बताता हूँ तो तू मूव्स क्यों नहीं करता आई थिंक रिमूव बोवन गेट इन ट्रेंट समहाउ आई डोंट नो हाउ रिमूव ब्रूनो फर्नांडिस and remove Timber को निकाल because I think anyways Ben White is coming in 2-3 game weeks. So just remove Bruno Fernandes and get in Trent. अब मिडफील्ड में किसको लाना है अब फॉरवर्ड्स का तो हमने बात कर लिया सो यू कैन रिप्लेस कूनिया एंड डीने आई होप यू हैव अ लॉट ऑफ फॉरवर्ड्स बाय नाउ सो जस्ट गेट वन ऑफ दोस रिप्लेसमेंट्स रिमूव ब्रूनो फर्नांडिस एंड गेट इन ट्रेंट अब मिडफील्डर्स की बात करते तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन मिडफील्ड ओके मिडफील्ड में मोस्ट बॉटन इज गॉर्डन और गॉड ठीक है मेरे पास है ये बट I'm kind of sad that he was a differential and now he's not. Embuemo, oh my god, Embuemo coming back in the teams. Embuemo was a cheeky differential but not anymore. 30% बहुत बढ़ गया and he's facing Southampton away. So Southampton को खेलना है तो मतलब टारगेट Southampton मतलब जो भी बंदा है उसको पॉइंट्स आ जाएंगे आई थिंक लास्ट गेम वीक में आई थिंक मैंने बोला था बोवन versus Southampton. And if you take him, and they took him and he scored. So it's like targeting weak teams, targeting Southampton gets you points. Luis Diaz, yeah, I think Luis Diaz made a transfer hota last game week if we knew that
एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन हिज फैमिली। तो बेसिकली उसके डैड को कोई चुरा लेता है कभी, या फिर कभी बुखार हो जाता है लुइस डियाज के पिताजी को, तो आपको वो ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ उसके इंजरी इश्यूज। तो लुइस डियाज, या डेफिनेटली लुइस डियाज वाज ऑन माय रेडार लास्ट वीक। आई थिंक गिब्स व्हाइट एंड इलांगा आर मोस्टली रिएक्शनरी मैनेजर्स। इसके अलावा साला मार्टिनेली वाज द वन हु काइंड ऑफ शोड अप लास्ट गेम वीक। I was not that positive about Martinelli, but getting much more minutes, which is pretty good after I think मुझे लगा था, या एग्जैक्टली, तो मतलब इट्स लाइक मुझे लगा था कि ट्रोसार्ड इज गोइंग टू बी मच मोर इफेक्टिव देन गैब्रियल, एंड आई स्टिल स्टे बाय इट, बट आई थिंक या गैब्रियल गेट्स मे बी मोर मिनट्स। बट अभी ईएफएल आने वाला है, ईएफएल एफए का बहुत सारी चीजें होने वाली है, तो रोटेशंस होने वाले हैं, इसलिए आपको वो चीज याद रखना पड़ेगा। तो मिडफील्ड अभी आई थिंक मेरे को भी अपनी टीम सॉर्ट करनी है, बिकॉज इट्स shit right now. I got in Cunha, Rogers, and they both are injured right now, along with not injured, suspended. Both are suspended. And Gomez, जिसको पहली क्लीन शीट मिलती जब से मैंने उसको लिया, 1-1-1-1-1-1-1 देख रहे हो, ये मेरे प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं है, ये इसकी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे 1-1-1-1, यहाँ पे 6 होता, बट ये इंजर्ड हो गए हमारे सर। तो Gomez is out and I have to find replacements in literally all positions. Um, uske, I think who do I play? I cannot even start Howard Taylor Bellis because Southampton भर के concede करती है. I wanted to get Mbuemo or Luis Diaz, but I have problems at defense because Gomez is going to be out for more than a month, according to Klopp नहीं ये Ancelotti. So let's just look at some. I'm just randomly looking. I think मुझे अपनी टीम सेट करनी है। मोस्ट अब ये देखो, यही तो चीज है, आपको देखना पड़ेगा। द डिफेंडर विथ मोस्ट पॉइंट्स इज आइना, ओला आइना। ओला आइना इज एट द टॉप। दिस इज व्हाई दिस सीजन इज सो वियर्ड, इतना वियर्ड। सेल्स का मैं समझता हूँ, बट आइना, आई रियली कांट। मतलब ये तो बहुत ही, मतलब हाउ कैन यू, मतलब एट होम में उनने कंसीड, टॉटनम के अगेंस्ट उनने कंसीड नहीं किया, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट उनने अवे नहीं कंसीड किया। दिस इज लाइक, एंड देन oh my god, Everton, after they held back versus a lot of teams, they didn't score versus Nottingham Forest. I mean, मिलनकोविच भी है यहाँ पे। कौन है ये, क्या शक्ल है इसकी, है कौन है ये? नहीं नहीं, ये मेरे को बताओ कौन है। ही इसको, इसका चेकअप कराना चाहिए सीरियसली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मिडफील्ड में आई थिंक आई हैव जस्ट वन फ्री ट्रांसफर, बट अभी मैं इस मूड में हूँ कि मुझे सब अपना बेच बाज के सब ठीक हो जाना है। बट या who do I even remove to get Mbuemo? Because Mbuemo is going to score versus Southampton for sure, but I have Gordon versus Tottenham. Ah, oh my god, it's a classic trap. Classic trap. I think जो गॉर्डन को ले रहे हैं, it's a classic trap. इसका मतलब है कि मैं बेच दूंगा? No, I don't think so. कूनिया को बेचूंगा तो let me just, I don't have funds right now. That's the issue. 2.4 है, but I would rather get Trent or someone right now. Can I get Trent right now? 7.2 defense. Alexander. Oh, exactly. I can exactly get Trent right now. So I just get him in. Cunha को replace कर सकता हूँ. Exactly, a funds for Trent. I didn't know that. I didn't know that I could afford Trent right now. So 7.2 million का हमें मिल रहा है Trent. ऊपर से let me just check if I can make any moves. Forwards में how these fixtures. I mean, Newcastle away is not bad. Chelsea's away is not bad. But 20th is missing. I think Cunha को कर सकते हैं ट्रांसफर आउट। -4 लेने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरी रैंक ऐसी है कि आई थिंक इट्स ऑलरेडी डाउन द हिल राइट नाउ, सो रादर जस्ट टेक अ लॉट ऑफ आई डोंट नो, टेक अ लॉट ऑफ रिस्क राइट नाउ। रॉल हिमेनेस देखता हूँ। रॉल हिमेनेस हैज डन वेल। रॉल हिमेनेस एट होम वर्सेस इप्सविच और वेस्ट हैम, ओके, 9 पॉइंट्स वर्सेस बॉर्नमथ एज वेल। Minutes is an issue for Raul Jimenez. क्या इप्सविच कुछ डिफरेंट कर सकती है वर्सेस फुलहम? या इप्सविच कुछ, बिकॉज दे वन वर्सेस
They actually won versus Chelsea. They won. They got a win. Yes, they got a win versus Chelsea, and थोड़ा hyped up होंगे. Let's see how Delap is doing. Delap has not bad. Both of the fixtures are not bad, and then playing at his academy, Manchester City, 11 points to consistency नहीं है. Raul Jimenez है. Let's see how Visa is doing. Visa 74, 90, 90. Visa is a big differential for this game week. बहुत सारे Embuemo owners will be expecting. I think Embuemo के थोड़े गोल से असिस्ट चुरा सकता है Visa. But I don't think. But ऐसा मत समझो कि Embuemo कुछ नहीं करेगा. Embuemo करेगा for sure, but he is the one who can steal his points. I think अगर आप मेरे I have 7 million का budget, so let me just 7.3, 6.8. Oh, Wood is 6.8. Can Wood solve my problems? Is all I'm asking, because next week वो लिवरपूल को खेलने वाला है, फिर साउथहैम्पटन होम में खेलने वाला हूँ. The fixtures are not bad of Wood. Wood की ownership is 31%. Oh, the fixtures of Wood are not bad. Are you sure he's back? Let me just check. Brentford FC. But it's still Southampton, na Suresh. It's still Southampton. Matlab. Blah, 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 blah. Let me just see. Lineup. If Shade is not, is Shade back? Is Shade back? Because here I cannot see him starting. Okay, he was brought on. He was brought on. So we are not sure that he's going to start. Shade is going to start versus Southampton. Let me just check उसके पहले वाला गेम. 0-0 में क्या खेला था Shade? No, he was not. So, okay, Shade was placed as a left wing back basically, or left winger. Shade starts easy fixtures. Okay, that's actually a good insight by Suyash. I think a lot of, but I still think Mbeumo has a decent chance because he's on pens as well, right? So has a decent chance of falling. But I would not, but yeah, I would not decrease his potential. But yeah, valid point because या बट हाँ मैंने इसे हाँ मैंने आई थिंक लास्ट सीजन जितना उसको देखा था वो विंग बैक खेलता था. इस सीजन मैंने आई थिंक ब्रेंटफोर्ड को बहुत ही कम देखा है. आई थिंक क्रिस वुड ले लूँ क्या फॉर -4. आई थिंक इट्स गोना बी इज वन ऑफ दोस मच मोर डिपेंडेबल. वुड का बेसिकली क्या है, ही इज अवे वर्सेस वुल्स व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग. वुल्स के नए मैनेजर के आने के बाद दे हैव बीन क्लचिंग रिजल्ट्स एंड नेक्स्ट गेम वीक में, मतलब नेक्स्ट गेम वीक में बेसिकली लिवरपूल, मतलब इट्स बेसिकली फाइटिंग एट द टॉप वर्सेस लिवरपूल. एंड देन उसके बाद मतलब होम गेम वर्सेस Southampton and Bournemouth is not bad. But I'm just saying लिवरपूल के अगेंस्ट टफ होगा. लिवरपूल के अगेंस्ट टफ होगा क्रिस वुड का. It's not going to be easy. So I like Mateta as well. मुझे Mateta भी काफी अच्छा लग रहा है. Chelsea at home, Leicester away, और West Ham away, Brentford at home. So a lot of forwards में options. Forwards में बहुत options हैं. To be really honest, बहुत options हैं. Jesus भी आ जाता है 6.9 million में. ब्राइटन के बाद 2 होम फिक्चर्स. द थिंग इज ये देख रहे हो आप 12 पॉइंट्स एंड 16 पॉइंट्स. 2 का मैं आपको बोलता हूं, Jesus is a points magnet. He likes to be at those positions. Jesus points लाता है when he starts. I think सिटी में भी जब वो था उसका बस स्टार्ट करना काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता था, बट जब वो स्टार्ट करता था यूज्ड टू गेट अ ब्रेस एटलीस्ट. So a lot of options at the forward. I think I'll get in Trent because I can finally I have that money in the bank. If and it's United as well. So it's not just about United being United. United is shit on set pieces as well, corners and all of that, free kicks. तो उसमें भी Trent काम आता है. Forwards में I need help in forwards because midfield में I don't think I'm gonna remove Rogers because I think Rogers next game week में आ रहा है Everton को खेलने. Arsenal, I think Rogers is a key for now, but I think if I had money next week, if I have money somehow, I don't know मुझे कैसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे होंगे, पर अगर मेरे पास पैसे होंगे तो I might move towards Luis Diaz right now. So forwards में I think I'll make my one move which is pretty guaranteed.
should I look at Newcastle's defense? आई थिंक मैंने बहुत अंडररेट किया न्यूकासल के डिफेंस को. लुइस हॉल तो इज डूइंग जस्ट टू गुड एवरी गेम वीक. स्पर्स अवे. Watkins versus Roll. This is a tough one. Watkins is playing at home to face Leicester or Everton, Ekman. Watkins is facing who? Watkins is facing Leicester at home, and Raul Jimenez is playing Ipswich at home. It's a tough one, bro. I cannot. I don't know. I really don't know. Go with your gut. What is the gut saying? अगर आपका gut Jimenez बोल रहा है तो go for Watkins. So I really don't know right now. It's very tough. These kind of these are like प्रॉपर 50-50 पर अगर आपको लग रहा है नहीं एक मिनट रुक जाओ बिकॉज आई थिंक वॉटकिंस का पोटेंशियल थोड़ा हाई हो सकता है क्या विदाउट मॉर्गन रॉजर्स और विल ही गेट लेस चांसेस बिकॉज ऑफ मॉर्गन रॉजर्स. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू थिंक. क्या उसके ऊपर पूरा डायरेक्ट उसके ऊपर ही पूरी डिपेंडेंस आ जाएगी वॉटकिंस के ऊपर या फिर उसको बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे. रॉल हिमेनेस आई डोंट थिंक रॉल हिमेनेस का इश्यूज इज JP decision based on vibes. Yeah. I'm also looking for a replacement forwards में बहुत दिमाग खराब हो रहा है एक्चुअली में. आई थिंक सबसे इजी बेट मेरे को क्रिस वुड लग रहा है बट डिफरेंशियल्स का देखा जाए तो रॉल हो गया, वॉटकिंस हो गए, गैब्रियल जेसूस हो गए, मटेटा हो गए. आई थिंक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड आई एम टेकिंग अ -4 टू गेट इन अ फॉरवर्ड. सो वो -4 को कंपनसेट करने वाला बंदा मुझे चाहिए. क्रिस वुड लॉन्ग टर्म इज क्रिस वुड का बेसिकली क्या है. क्रिस वुड इज फेसिंग अवे है ना अभी गेम में. लेट मी जस्ट चेक. वर्ड का अभी गेम है अवे अवे एट वोल्स. वोल्स हैज बीन डूइंग वेल इन द लास्ट 3 गेम वीक्स. वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को बट उसके बाद वो लिवरपूल को खेल रहा है. सो लिवरपूल आई एम नॉट सो श्योर यार अब बिकॉज रॉल हिमेनेस के अगर आप फिक्चर्स देखो. अच्छा ये वो भी का निकाल के फिक्चर्स देख लेते हैं. तो इप्सविच एट होम, वेस्ट हैम अवे, लेस्टर अवे. आई थिंक अवे गेम्स फुलम के लिए टफ होते हैं बट या आई थिंक रॉल हिमेनेस का सबसे बड़ा इशू इज हिज मिनट्स, नथिंग एल्स. एंड मुनीज ने आके आई थिंक gets goals one way or the other. Yes, exactly. That's an issue. And being at the, I think, being at, I think Nottingham Forest का main reason यही रहा है. I think I've talked about Wood right now. I've actually when starting में बोला था कि he's got 11 goals in 20 shot on targets. मतलब that's way over performance. बहुत ही over perform किया है क्रिस वुड ने अपना XG. And that he has been lucky with थोड़ा defensive errors as well from the opponents. या बट वो भी 70-75 मिनट्स में सब आउट होता है बट रॉल हिमेनेस और जल्दी सब आउट हो जाता है. बट क्रिस वुड समहाउ इज अराउंड गोल्स राइट नाउ. पहले क्रिस वुड जब बर्नली में होता था तब ही वाज मोर ऑफ अ होम होम स्कोरर. मतलब बर्नली भी बहुत कम गोल्स मारती थी. आई थिंक निक पोप का अगर आपको सीजन याद है आई थिंक डिफेंसिवली Nick Pope was the keeper of Burnley and he was in the team for मतलब सब टीम में था वो. And Chris Wood used to be starting in front of them and he used to only score in home games because creators में Burnley के पास hardly बहुत कम players थे जो अच्छा करते थे on consistent basis. जैसे McNeil and Gudmundsson someone like that ऐसे players होते थे. चार्ली टेलर भी होता था जो अभी किसी और टीम में है. Yeah, forwards is going to be a tough pick. Up now, defense may I have money for Trent, but I am looking at Newcastle right now. Should I look at Newcastle defense right now because they're facing Spurs away. Spurs home में Spurs का एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं. Spurs की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. Let me just click at Solanke and Spurs की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. Spurs has drawn, lost. Okay, at home they have lost, at home they have drawn, at home they have lost. Home में बहुत बकवास रिकॉर्ड है यार. It's not about that Newcastle has a great defense. Dubravka's price is nice, but Nick Pope कितने देर तक बाहर है वो देखते हैं. रुक जाओ. Nick Pope कितनी देर तक आउट है.
Let me just check. Nick Pope expected to miss a month. Okay, Nick Pope is expected to miss a month. ये आया था last week. Okay, last week. Okay, so I think yeah, Nick Pope is out for a while, but हाँ अभी के लिए I think Spurs के ऊपर मैं इतना तो ट्रस्ट कर सकता हूँ to destroy Hall's clean sheet. Come on, Spurs man, come on. तो इसलिए अगर I think इसलिए मैं ट्रेंड की तरफ जा रहा हूँ because I think he has. I was just waiting all this time I've been saying the same thing about Trent. भाई तू दिखा बस. Are you worth that price? Are you worth that price? And considering he has got a haul, 15 points is not just about that. He's facing Manchester United, and Man United is all over the place. Man United is all over the place. Still no Rashford. Is Bruno Fernandes back? Let me see if Bruno Fernandes is back. Bruno Fernandes is back or not? Let's just check. Fernandes, is Bruno Fernandes back for this game week? दिखा दिया ट्रेंड ने एग्जैक्टली. ब्रूनो फर्नांडस. Is Bruno Fernandes playing for the next game week? Okay, Bruno is back. Yeah, मैंने देख लिया. Bruno is back. Yes. Bruno is back. So I think फिर भी यूनाइटेड का I think वही चीज़ है. United is going to be United. बहुत खुली रहेगी. Nottingham Forest away will be a tough game for Trent. But I think it's worth it. I think इतना रिस्क तो हम ले सकते हैं. So I think I'm locking in my team, locking in my first transfer. That is from Gomez. जिसको I'm moving from defender of the same team to another defender. Gomez को clean sheet लाना था, but he got injured. So my first, I think, transfer is done. That is from Gomez to Trent. I think I would have benched Tosin Adarabioyo considering क्या अभी चल रहा है last two game weeks में with Chelsea. But since I have no options in the bench, I'm gonna start him. And मैं हावो टेलर बेलिस को नहीं स्टार्ट करने वाला at home. Even though Brentford का away form is not that great, I'll probably put him on the he's gonna come on if other players don't play. Should I start him over Cunha? Should I? नहीं, I think -4 लेना चाहिए मुझे. I think rank वैसे भी बहुत कही हुई है. So it really doesn't matter. If I'm going down, I'll go totally down या फिर risk लेकर ऊपर आना पड़ता है. So Wood, ah, bro, Wood at away games, away games, away games. Looks very tough. I think forwards का decision काफी tough है. And yeah, काफी tough लग रहा है मुझे forwards में क्या लूं. uh, Watkins at home. मुझे एक चीज बताओ, Watkins अगर if Morgan Rogers is right now suspended, will it be tough for Watkins to score goals because Morgan Rogers नहीं है create करने के लिए, chances कम हो जाएंगे, या फिर he becomes the opposite, he becomes the main man for Aston Villa and he gets all the balls. I don't know. It's either of those. Because अगर if he is getting a lot of, if all of the chances, no Rogers and Duran तो पहले ही निकल लिया था. तो उससे I think does Oliver Watkins get more chances is what I'm asking. Uh, Raul Jimenez, Stan Larson, no. या जेजूस की तरफ जाऊं क्या मैं जेजूस की तरफ जाऊं? Watkins has a point to prove, but without Rogers, I don't see a haul coming. I don't know. I'm a bit. It can be. There wasn't final version. Yeah, okay. He will return most probably, but no big haul. Hmm. Hmm. It's a tough one. वही तो tough लग रहा है मुझे. I think Nottingham Forest की भी clean sheet आ सकती है इस week फिर से मुझे लगता है, क्योंकि Wolves is without Cunha. Cunha tough है, but yeah, Gabriel Jesus versus Brighton is a really good fixture. I think Arsenal versus Brighton is going to be a great match. Anyway, 9 minutes to go, guys. Lock in your teams if you have not. Captaincy, I think is going to be on Salah
फॉर श्योर कैप्टनसी इज गोना बी ऑन साला। फॉरवर्ड्स में जजूस, जजूस, पता नहीं मटेटा क्यों नहीं ले रहे लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाउ इज मटेटा नॉट हियर? जस्ट अ सेकंड। मटेटा, 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 व्हाई आर पीपल नॉट गोइंग फॉर मटेटा? मटेटा इज हियर। मेरे को फिक्चर्स अच्छे लग रहे हैं क्रिस्टल पैलेस के। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा इस साल के लिए उसको, आई डोंट नो, आई लाइक द फिक्चर्स एंड विद द प्रॉब्लम इज इस साल अच्छा क्यों नहीं किया, बिकॉज एजे नहीं था ना। अब एजे इज बैक, लास्ट गेम वीक में 2-1 जीते हैं क्रिस्टल पैलेस। आई डोंट नो, I just have a feeling about Mateta. That's it. I think I have a feeling about Mateta. A way too differential right now. I think it's between Jesus, it's Jesus and Wood. It's between Jesus and Wood for me. ओनरशिप के साथ देखा जाए तो आई थिंक ओनरशिप के हिसाब से ओनरशिप के हिसाब से आई थिंक आई शुड गो फॉर वुड। आई थिंक आप सार, नो नो, राइट नाउ पता है लास्ट गेम वीक में भी मैंने देखा था कि एजे एजे के आने के बाद पूरा, आई टोल्ड यू एजे इज गोना बी अ मेजर डिफरेंशियल, सो आई थिंक द लाइमलाइट विल शिफ्ट फ्रॉम सार टू एजे। आई थिंक सार का हो चुका है। लेट मी जस्ट चेक सुरेश इज सेइंग कि कुछ लीक्स, लेट मी जस्ट चेक एनी लीक्स। Let me just check if any leaks. I don't think अभी कोई leaks आ रहे हैं. Sir had like one XG in the last game says against I like his answers. Yeah, I just feel as a K, I don't know. Yeah, I mean it's like if you have him, you can start him. Obviously, अभी switch करना sense नहीं बनता. If you have Sar, just start him because yeah, if he gets something, it's pretty good. Okay, this guy is getting Gordon. Okay, wait a minute. I really don't see any leak news right now. Any news on Son आएगा तो share. Yeah, but I don't think I'm gonna get anything अभी. I think क्रिस्टल पैलेस के क्लीन शीट पोटेंशियल, नॉटिंघम फॉरेस्ट के, न्यूकासल के, बेसिकली जो भी मेरे पास नहीं है उनके क्लीन शीट पोटेंशियल काफी हाई है। एंड होपफुली स्पर्स डू समथिंग वर्सेस न्यूकासल। प्लीज क्लीन शीट नहीं देख सकता मैं लुइस हॉल के ऊपर, और नॉटिंघम फॉरेस्ट के ऊपर आप गिवन अप बिकॉज उनके क्लीन शीट्स लाने काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। तो बट नेक्स्ट गेम वीक मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक क्रिस्टल पैलेस वर्सेस चेल्सी में भी क्लीन शीट पोटेंशियल है। होपफुली पामर डज समथिंग। मिडफील्ड में या मिड आई थिंक जेजूस ला सकता हूँ क्या? लेट मी जस्ट चेक इफ जेजूस स्टार्ट तो करेगा ना, जेजूस बेंच नहीं होना चाहिए। जेजूस शुड आई गेट इन जेजूस? क्या जेजूस रोटेट हो सकता है क्या? मिड अंडर 13 मिलियन, इतने सारे हैं मिडफील्ड में, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। लुइस डियाज आई थिंक फर्स्ट वन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, हमने डिस्कस किया था। मिडफील्डर्स में एम्बोएमो जस्ट बिकॉज ऑफ द साउथहैम्पटन फिक्चर, आई नो यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बट लुइस डियाज 7.6 मिलियन, यूनाइटेड, नॉटिंघम फॉरेस्ट। जब तक लुइस डियाज इज स्टार्टिंग तब तक इट्स गुड न्यूज। अगर वो बेंच हो रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम। इवोबी इज ऑल अबाउट स्टैट्स, बट फाइनल थर्ड में उसका कंट्रीब्यूशन लेस है, इसलिए उसको आप पॉइंट्स देखते हुए ना सिटी मेड वर्थ इट। आई थिंक बहुत सारे लोग ने 3-4 गेम वीक पहले, आई थिंक गेम वीक 18 से, आई थिंक दिव्यांश भी बात कर रहा था कि गेम वीक 18 से ब्रिंग बैक हालैंड। दैट्स एन इशू, सिटी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट थिंग। आई थिंक फोर्डन की तरफ बहुत सारे लोग गए थे। या एग्जैक्टली दैट्स एन इशू। एंड अभी आर्सेनल के अगर मैं फिक्चर्स देखूं तो हाँ, सिटी की बात करते सुरेश, तो आई रियली, आई मीन लेट देम गेट बैक इन फॉर्म। आई थिंक बहुत सारे लोग फोर्डन की तरफ गए थे एंड ही काइंड ऑफ स्कोर्ड एज वेल, बट आई डोंट नो, इट्स अ वेरी बिग रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। वो थोड़ा परफॉर्म करना चाहिए, थोड़ा मोमेंटम दिखाएं थोड़ा सा। मार्टिनेली, या आई थिंक मार्टिनेली इज गुड इन ऑर्डर टू कवर, बट ओडेगार्ड मैं ऊपर रखना चाहूंगा। ओडेगार्ड, ट्रोसार्ड एंड मार्टिनेली, आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव मेड अप माय माइंड ऑन लास्ट वीक एज वेल। अगर मार्टिनेली फिर से स्कोर करता है तो होपफुली देन आई विल प्रोबब्ली चेंज माय माइंड, बिकॉज कभी ना कभी तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। आई कैन नॉट बी so rigid to my thoughts regarding the scoring potentials of someone. 13 मिलियन में who else? I think बहुत सारे लोग सार की तरफ जा रहे हैं, but I like एजे।
So Eze is someone that you can consider. Uh, who else? Who else? Odegaard. I think Odegaard for 8.3 is pretty good. Eze, I like the potential of Eze. Martinelli, uh, Martinelli or Trossard. उसके बाद who else? I think उसके बाद तो Gordon. I think Gordon is a trap. I think Tottenham के against I don't think कुछ करेगा. Then Wolves at home, he might get rotated. Next two home games के हिसाब से I think लोगों ने लिया, but versus Spurs, so I don't see Gordon doing anything. 3 minutes to go. I have to decide on my transfer. Odegaard has penalties and corners from Saka's side. Yeah, exactly. इसलिए Odegaard is on top for me. Diaz in. Kulusevski has been very nice. Yeah, I mean, we have talked about Spurs. Now, Spurs में they have Brennan Johnson, Solanke, Son, Madison, Kulusevski और एक दो कोई और प्लेयर थे, है ना? तो ये सब प्लेयर्स जब आ जाते हैं ना, 5-6 प्लेयर्स, तो फिर हॉल करने की पोटेंशियल कम हो जाती है. हाँ, मतलब कुलुसेव्स्की कैन प्रोवाइड यू मे बी असिस्ट, अ लॉट ऑफ असिस्ट मे बी, एंड बीच में एक हॉल, वो हो सकता है. बट आई फील इज अबाउट कंसिस्टेंसी. आई थिंक फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे टीम में गॉर्डन क्यों है. हाँ, गॉर्डन मैंने तब लिया था जब बहुत डिफरेंशियल था, अभी मेन स्ट्रीम हो गया है वो. तो इट्स ऑल्सो अबाउट ओनरशिप्स. हाँ, so I agree. I totally agree. मतलब Kulusevski has looked great, probably the best player of Spurs this season. Let me just check Arsenal के fixtures क्या हैं आने वाले टाइम में. I have 2 minutes to decide. Oof, I have 2 minutes to decide, वरना फिर क्रिस वुड आ जाएगा. क्रिस वुड आ जाएगा. Let me just check. Arsenal is facing 8th को, is facing Newcastle. उसके बाद यूनाइटेड को खेल रही है 16th. ओके ओके, रोटेशंस हो सकते हैं जेसूस के. दैट्स एन इशू. Oof, should I get in Chris Wood then? Should I get in Chris Wood or Jesus? I think Jesus इस गेम वीक में मार सकता है. मैं वो नहीं बोला कि इस गेम वीक में नहीं मारेगा. Both are potentially going to score in this game week, but it's about upcoming game weeks. थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ मैं. Havertz का क्या सीन है? Is Havertz gonna play? Oh God, I have 1 minute actually to decide. Havertz. 1 minute to decide. Oh, let me just check on Twitter. ट्विटर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा. इंडिया के मैच के बारे में आ रहा है. Fuck, let's go with Jesus. I'll switch next game week. Let's just go for it. है ना? Just go for it. Let's just go for it. मटेरियल ले आओ भाई, खुश हो जा. नहीं, I've gone for Jesus. And because I got in roll, you know what it means. I know, but roll का वो मेरा ऑप्शन ही नहीं था. I've gotten Jesus. After a very long time. I think let's just play. I mean, क्या करें अब, जो भी है चल रहा है. जो भी है चल रहा है. जो भी ये चलता है. क्रिस वुड वैसे भी हमारी मार रहा था और मारते रहेगा, और क्या ही सीन है. इट्स फाइन. सो गाइस, दैट इज इट. आई थिंक डेडलाइन हैज पास्ड एंड दिस इज माय टीम फॉर गेम वीक 20. सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है -4. आई हैव टेकन -4. सेकंड इशू है कि आई एम प्लेइंग टोसिटर अराबायो, हु इज गोना कंसीड 100% श्योर. तीसरा प्रॉब्लम है कि मेरे पास लुइस हॉल नहीं है, जो बहुत पॉइंट्स ला रहा है. गुड थिंग इज आई हैव गॉट इन ट्रेंट, बिकॉज मेरे को फिर फोमो खत्म हो जाएगा. Bad thing is that I still don't have anyone from Nottingham Forest. Chris Wood नहीं है, and they are at number 2 in the table right now. Midfield में I think Luis Diaz is the main problem. Luis Diaz, and then forwards में again Watkins के against में जा रहा हूँ, वो तो जा ही रहा हूँ बचपन से. ऊपर से Chris Wood भी आ चुका है. Yeah, so Jesus differential 9.3%. I need it. I need that. I need something, bro. I need it. तो आई थिंक लेट्स गो विथ प्रेडिक्शंस राइट नाउ. जल्दी से प्रेडिक्शंस कर लेते हैं. स्पर्स वर्सेस न्यूकासल. न्यूकासल इज गोइंग टू विन, बट कितनी बार स्पर्स होम में हारेगी यार, कितनी बार. So I'm going to go with 2-2. I'm going to go with 2-2 because Spurs playing at home, they want a reaction. But now their manager is going to get stacked and sacked. So I think it's one of those games. I think both patience test हो रहा है Spurs के managers का. I'm going with 2-2. Spurs scoring first and then 1-1 होगा. Then Spurs scoring again and then finally Newcastle will equalize. Aston Villa versus Leicester, clean sheet potential.
but I think I will go with 1-1. 1-1, nahi, 1-1. Let's go with 1-1. Yeah, let's go with 1-1. Aston Villa 1, Leicester 1. Bournemouth versus Everton. Bournemouth versus Everton is going to be a tight one. Logically, देखा जाए तो Bournemouth has been doing well this season. Everton park करेगी बस. So I'll go with Bournemouth. I'll go with Bournemouth 3-0 win. Let's make a statement. Bournemouth 3-0 win. Crystal Palace versus Chelsea. Uh, मतलब लास्ट वीक तो काफी बेकार दिखी थी चेल्सी. इस गेम वीक का वी आर नॉट श्योर. इस गेम वीक में पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा चेल्सी की तरफ से. सो लेट्स जस्ट गो फॉर 2-2 अगेन. 2-2 फॉर क्रिस्टल पैलेस. बहुत 2-2 बोल लिया ना मैंने. आई थिंक 2-2 मैंने ये भी बोला था स्पर्स वर्सेस न्यूकासल. हाँ, ये सेकंड है. 2-2 क्रिस्टल पैलेस वर्सेस चेल्सी. सिटी वर्सेस वेस्ट हैम इज गोना बी टफ वन. नॉट इजी. ये टफ होगा ये गेम. बट आई विल से सिटी विल विन दिस. नहीं, सिटी जीते ही क्या. City has a lot of injuries and a lot of defensive problems. मैं रिको इसको खिला रहा हूँ. वाओ, ये तो मुझे याद ही नहीं था. So I'll go with 3-1 win for City. Haaland will score. Haaland has to get on score sheet. And Southampton versus Brentford may tough game. I think not it's not going to be easy because Brentford ka away record is not that great. So I'll just go for 2-1 win for Brentford. Late comeback for Brentford as usual. Brighton versus Arsenal में I expect goals. ये boring game नहीं होना चाहिए. ये बिल्कुल भी boring game नहीं होना चाहिए. And I'm going for 2-1 win for Arsenal. नहीं, 2-0. I'll go with a clean sheet. 2-0 win for Arsenal. Fulham versus Ipswich में आते हैं. तो it's gonna be Fulham doing really well at home. Obviously, clean sheet आएगी Fulham की. I don't think Ipswich is going to score versus Fulham. So I'll just go with 2-0 win for Fulham. Straightforward. Liverpool versus Man United is going to be a hell for Manchester United in Anfield, at the Anfield. Liverpool 3-1. I think 3-1 Liverpool. I think United कहीं से गोल मार सकती है. Just instincts. Wolves versus Nottingham Forest. I think 3-1 win for Nottingham Forest. A brace from Chris Wood because I've not got him. So this is my game week, or this is my team for game week. I've gotten Jesus and Trent. Hopefully Trent -4 को थोड़ा valid रखे. Gabriel Jesus' vibes. So going against Chris Wood again, and this is a very shitty season, very shitty campaign for me, but that is how we play FPL.